Yeah. So today, what there was a request to discuss how to select stock. So first, a disclaimer: I am not an expert in selecting stock, and but yeah, सब तो थोड़े बहुत stock में काम करते हैं. So I am also one of them. I'll share what works for me, what doesn't work for me, and we can collectively discuss. सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि it's very very difficult to beat index returns, Nifty returns. So Nifty has given compounded return of about in last 30 years about 8.5%. If you take from beginning of the Nifty, it has given about 12% return. तो बेस्ट है ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कर दीजिए, या म्यूचुअल फंड जो निफ्टी को ट्रैक करते हैं उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए. दैट इज द दैट इज आई थिंक द बेस्ट थिंग. ऑन टॉप ऑफ दैट इफ यू वांट टू इनहांस योर रिटर्न यू कैन गो फॉर कवर्ड कॉल. हमने एक सेशन डिस्कस किया था जिसमें आप ऑप्शंस बेच सकते हैं फॉरवर्ड के. और एट द सेम टाइम यू कैन गो फॉर सिक्योर्ड पुट. आप नीचे का पुट ऑप्शन बेच सकते हैं. तो आपका इनहैंस एनुअली अबाउट 4 to 5% बढ़ जाएगा रिटर्न. एटलीस्ट ज्यादा भी बढ़ सकता है बट एटलीस्ट 4-5% से रिटर्न बढ़ जाएगा. विच गिव्स अस अबाउट 12 to 13% एनुअलाइज रिटर्न, which is a decent return to have with at a very low risk strategy. Why I say it's a low risk strategy? So I'll just share the Nifty chart. So this is the chart of Nifty. Okay. So this is how to read the chart. I'll share. Okay, let me hide this. Okay. So how to read this chart? Basically, if you see long term, we discussed earlier also long term trend. If you see Nifty is just going up. This is daily chart of Nifty. So if I make it a monthly chart of Nifty, if you see Nifty has only one trend that it keeps on going up. So unless this trend reverses, Nifty is likely to make money in long period of time. और निफ्टी को आप टाइम भी करेंगे ना तो आपके रिटर्न में बहुत ज्यादा कुछ चेंज होने वाला नहीं है. सो निफ्टी मुझे लगता है कि सबसे सेफ बेट है रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे देखें तो मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वर्सेस व्हाट यू कैन मेक. निफ्टी में आप अगर ऑप्शंस को इम्बेड कर दें तो you'll make 12%. I'm saying 12%. Actually, you'll make about 15% per annum, and it will require least amount of intervention from you. महीने में आपको मैक्सिमम एक सप्ते में एक बार भी आप अपनी पोजीशन को देखेंगे तो सफिशिएंट है टू मेक मनी फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट. And there are very very few people who can beat the index. So that will be less than 2% of population who can beat the index return. So if you think you can be that population, that person, that or you aspire to be that person, individual stock selection is for us. So individual stock selection can happen in many ways. One way of selecting stock individually is that ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है या इस कंपनी को मैं अच्छे से जानता हूँ. सपोज कीजिए कमल कोटक बैंक में काम करते हैं. कमल समझते हैं मैं क्रेडिट में हूँ कोटक बैंक में, पोर्टफोलियो की क्वालिटी मुझे पता है, सो आई कैन गो एंड बाय कोटक बैंक. वन इज बाइंग कोटक बैंक. सपोज करो खरीद लिया उन्होंने 1,000 रुपए में कोटक बैंक को. What is the right price? Some price so you have to sell the business, right? What price one should sell the share? हाँ? अभी ऐसा भी लग सकता है कि कोटक बैंक तो बहुत महंगा लग रहा है, सस्ता होगा तो खरीदूंगा. What price I should enter? What price I should exit? Is a big challenge. Like I'm fan of IT stocks, TCS and all. When I wonder stock like TCS are listed, मेरा तो बहुत favorite stock है. But what is the right price to enter TCS and what is the right price to exit TCS? So if you are a student of finance, then you can see ki what is the revenue growth, what is the EBITDA growth, what is the profit growth, and how is the year looking forward. Then you can invest basis the value of the company. Challenge is ki there are so many macro play things are playing in the market. It is very difficult to evaluate all those macro players also because the price of stock is not decided by the only the performance of the company. Many global factors and domestic factors affect the stock or the price. कि आपका आज इलेक्शन आ गया,
यूएसडी आईएनआर डिप्रिशिएट हो गया, डिप्रिशिएट हो गया, ग्लोबल मार्केट में फॉल आ गया, तो हम सारे फैक्टर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट मैं नहीं कर पाऊंगा कि जो मैंने इन्वेस्ट किया है सारे मैक्रोस को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा कि उसका मेरे पे इम्पैक्ट क्या आने वाला है। सो इसके लिए, तो जैसे वॉरेन बफेट है, he picks up the stock at the lowest level and sells almost at the peak of the price. But I think I don't have that capability, and most of us don't have capability. So mostly retail investor like us wants to buy cheap. जो स्टॉक गिर रहा है वो स्टॉक हम खरीद लेते हैं। टिपिकली हमको ऐसा लगता है सस्ता हो गया तो और क्या गिरेगा यहाँ से, हम खरीद लेते हैं। और हमारे पोर्टफोलियो में दो स्टॉक हैं, एक 50% प्रॉफिट में, 50% लॉस में है। If we have to sell a stock, most of us will sell the stock which is in 50% profit, not the stock which is 50% loss. अभी आप देखिए, माली में एक बगीचे में माली है, तो कौन से फूल को काटता हो? जो सड़ रहा होता है। जो फूल खिल रहा है उसको तो काटने की जरूरत नहीं है, राइट? बट मोस्ट ऑफ अस टेंड टू सेल द स्टॉक्स which are making profit and tend to keep the stocks which are making losses. एक normal tendency है, there will be very few exceptions who will be selling the stock which are making losses and continue with the stock which are making profit. So 80-20 rule applies in stock selection. 20% of your stock will give you 80% of the return, whether it is positive return or negative return. So most of us tend to keep on having the negative return rather than positive return. क्यों? वो प्रॉफिट वाले स्टॉक को तो बेच दिया, लॉस वाले स्टॉक को हमने रख लिया। तो अब ये क्वेश्चन है कि एक हमने सपोज करो कोटक बैंक एक स्टॉक ले लिया, कोटक बैंक हमको समझ में आ गया कोटक बैंक खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदूं और किस प्राइस पे बेचूं? आई स्टार्ट विद यस बैंक। यस बैंक में मैं इन्वेस्टेड था, देन वी कैन पिक अप एनी स्टॉक। So let's say go to the chart of यस बैंक। जो भी मार्केट में यस बैंक के बारे में ऑलमोस्ट हर आदमी को पता है यस बैंक के साथ क्या हुआ। यस बैंक का स्टॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ 2005 में अराउंड 11-12 रुपीज, एंड आज यहाँ पे है roughly at the price of 20 rupees. It went up to 403 rupees. तो अभी क्वेश्चन है कि किस प्राइस पे यस बैंक को खरीदा जाए, किस प्राइस पे बेचा जाए यस बैंक को। पहले चार्ट कैसे देते हैं मैं समझा देता हूँ आपको, बिकॉज दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टर्म्स ऑफ हाउ वी सेलेक्ट a stock. So I'll explain the chart with the help of Nifty. You can see chart at TradingView, or you are using Zerodha or any other app, you can see the chart. ठीक है ना? अभी हम निफ्टी के डेली चार्ट पे आ जाते हैं। तो चार्ट यू कैन सी इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। सो राइट नाउ वी आर सीइंग द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। अभी सो निफ्टी का अप ट्रेंड, वन इज दैट निफ्टी ऑलवेज गोइंग अप, तो मैं निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। देयर आर टू वेज टू इन्वेस्ट। वन इज दैट आई लुक फॉर द बॉटम ऑफ द निफ्टी एंड देन बाय। बॉटम इज से 15,300, then I'll buy. Other is that when Nifty is going up, I'll buy. So say Nifty is going up here, I will buy. So let's see how the chart, how to read the chart. Chart is simply क्या है, इसमें आपके कैंडल स्टिक्स बने हुए हैं। सो ग्रीन कैंडल इंडिकेट्स कि आज स्टॉक खुला तो ऊपर बंद हुआ, जितने पे खुला उससे ऊपर बंद हुआ। रेड कैंडल इंडिकेट्स जितने पे खुला उससे नीचे बंद हुआ। तो निफ्टी पीक्ड आउट एट 18,870 872 रिसेंटली, एंड वहां से निफ्टी रोज नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो दिस इज अ चार्ट, दिस इज हाउ टू रीड द चार्ट। निफ्टी राइट नाउ नॉट एबल टू डिसाइड इट्स डायरेक्शन। आप देखेंगे दो लाइन और बनी हुई है, एक ब्लू लाइन बनी हुई है और एक ग्रीन लाइन बनी हुई है। ब्लू लाइन इज 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सब समझते हैं ना, कि आपने लास्ट 2 दिन 5 दिन के स्टॉक प्राइस का एवरेज निकाल लिया, तो दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज व्हेन यू आर टेकिंग गिविंग मोर वेटेज टू द करंट प्राइसेस एंड लेस वेटेज टू द प्राइसेस एट डिस्टेंस। 50 डेज मतलब रफली आपके 2 महीने हो गए, बिकॉज एक महीने में रफली
10 हॉलीडेज होते हैं, 50 डेज मतलब टू रफली 2 मंथ्स एवरेज प्राइस। ग्रीन लाइन इज 200 EMA, तो 200 इज रफली 1 ईयर एवरेज प्राइस ऑफ द स्टॉक। अभी आपको एक मैं ब्यूटी दिखाता हूँ। सी दिस निफ्टी, दिस इज 50 days average moving price, moving exponential moving price. It rarely comes below this price. Okay, so this is generally above 50 days moving price. Generally, if you see, and it very, very rarely breaks 200 moving days. Rarely breaks 200. Okay, so what you make out of it? तो निफ्टी मुझे अगर खरीदना है, और अगर ये 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, मोस्टली 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है, और निफ्टी और 200 मूविंग एवरेज तो बहुत ही कम तोड़ता है। ठीक है, सोफा क्लियर? एनी क्वेश्चन मूविंग एवरेज पे? मूविंग एवरेज क्लियर है? ओके, ठीक है। सो देयर टू स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग, कि भाई मुझे तो सबसे सस्ता खरीदना है। एक स्कूल ये है। दूसरा बोलता है कि भाई मुझे पता नहीं, जिस प्राइस पे खरीद लूं मैं, जिस प्राइस पे खरीदूं उससे पैसे बनेंगे। पहले स्कूल ऑफ थॉट में जहां पे आपको लगता है कि मुझे सस्ता खरीदना है, ये प्रिडिक्ट द मार्केट, मार्केट आगे कैसे होने वाली है। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट में यू फॉलो द मार्केट, यू हैव नो माइंड ऑफ योर ओन, यू फॉलो द बिग माइंड। बाजार का जैसा मन, मैं बाजार के साथ में। बाजार में तेजी माने तेजी, बाजार में मंदी माने मंदी। दूसरा होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग में कि बाजार में मंदी माने अब तेजी आएगी, अभी तेजी है माने मंदी आएगी। हम उस स्कूल ऑफ थॉट में नहीं है। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग, कि जो सस्ता है आगे जाके बढ़ेगा। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जब जो महंगा है और महंगा हो जाएगा तो सस्ता है और सस्ता हो जाएगा। यू मेक इन लॉन्ग टर्म मोर रिटर्न इन मोमेंटम इन्वेस्टिंग देन वैल्यू इन्वेस्टिंग, मच मच मोर रिटर्न एटलीस्ट। अगर आपको एवरेज 17-18% बन रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग में, यू विल मेक एटलीस्ट 24 to 25% in momentum investing. And it was very difficult for me to shift from value investing to momentum investing, because generally we tend to buy cheap. महंगा हो गया तो क्यों खरीदेंगे, है ना? I'll give you an example. Suppose if I have to buy Yes Bank using the value investing chart, when I should have bought Yes Bank and when I should have exited Yes Bank. So, so let's go for listing, and since it's listed, and assume that I was in the market knowing that there is something called value momentum investing. When should I bought? Momentum investing, you buy a stock when it is at its peak on the day you are buying. So say if the stock listed here, I will not buy the stock here. So if at all, I will buy the stock this day, this day. But since the stock was new, there was no chart available. The 50-day EMA was not available. तो जब तक स्टॉक को 50 दिन लिस्टिंग के नहीं हो जाते, हम नहीं खरीदेंगे। तो स्टॉक 50 दिन लिस्टिंग के हो गए, एंड सपोज करता हूँ मैं सितंबर 2005 में था, और मुझे ये, मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग समझता था। So this, after this, the stock has shown peak here, which is 14 rupees 40 paisa. So it's shown on 11th October 2005. I'll wait for the stock to cross 14 rupees 40 paisa, then only I'll buy. If it cross, if it cross, uh, crosses above 14 rupees 40 paisa, it means the stock is in momentum. बाजार इस स्टॉक में तेजी है। अब मैं कैंडल के क्लोज होने के बाद खरीदूंगा। यहाँ पे इसने थोड़ा 14 रुपीज 45 पैसे को मैं खरीदा नहीं, बिकॉज कैंडल इसके नीचे बंद हुई। देन आई वेट फॉर दिस कैंडल टू क्रॉस। इसने यहाँ पे ये कैंडल तोड़ा यहाँ पे। नेक्स्ट डे आई बॉट दिस स्टॉक एट 16 रुपीज 35 पैसा। ये खरीद तो लिया स्टॉक को, मैं बेचूंगा कब? जब ये 50 मूविंग डे से नीचे क्लोज करेगा स्टॉक। अगर नीचे नहीं क्लोज करेगा तो मैं नहीं बेचूंगा। मैंने इसको खरीदा 27 जून 2006 को,
at 16 rupees 65 paisa, and I just sit with the stock. It closes, तो क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल पे नहीं बेचूंगा मैं, नेक्स्ट कैंडल पे। नेक्स्ट कैंडल इसे दिया 23 मई 2006 को 18 रुपीज पे। सो आई बाय दिस स्टॉक एट 16 रुपीज 50 पैसा, 27 Jan 2006। I sell at 18 rupees. I make 10% in roughly जनवरी टू मई इज अबाउट 5 मंथ्स। फिर मैं स्टॉक को वेट करता हूँ 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करने के। अब इसके ऊपर जब क्लोज करेगा तभी खरीदूंगा, इसके ऊपर नहीं क्लोज करेगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो इसके ऊपर ये स्टॉक ने क्लोज किया यहाँ पे 23 अक्टूबर 2006 को 22 रुपये 55 पैसे में। आई हैव सोल्ड एट 18 रुपीज 50 पैसा, बट आई एम बाइंग इट एट 22 रुपीज 55 पैसा। इट्स ओके, आई एम ओके टू बाय एट हायर प्राइस। 22.50 में मैंने खरीदा। अगेन आई वेट फॉर इट टू क्रॉस 50 EMA के नीचे क्लोज दिया इसे। इसे दिया 28 रुपए पे। सो say I bought it at say 22.95 in 20th October 2006. I sold this stock at 27.85 in May 2006. It's okay, 4-5% return आया एक महीने में। Again, I'll buy when it closes above this price. So it closes here at 34 rupees. 34 में खरीदा, यहाँ पे बेचा। I again buy here. Okay. आपका फिर यहाँ स्टॉक निकल गया ये, फिर आपने इसको यहाँ खरीदा, फिर ये यहाँ पे निकल गया, फिर यहाँ खरीदा आपने, ये क्लोजिंग के बाद ऊपर आ गया, आपने यहाँ खरीदा, ये स्टॉक आपका यहाँ चला गया, देन इट फॉल्स, यू डोंट डू एनीथिंग विद द स्टॉक। 2009 की ये स्टॉक जब भी 50 EMA के नीचे, मैं स्टॉक को कभी नहीं खरीदूंगा 200 और 50 EMA के नीचे। स्टॉक ने, ये स्टॉक यहाँ वापस ऊपर आया, लास्ट हाई में वेट करूंगा, इसका लास्ट हाई कहाँ था, यहाँ पे। सो व्हेन द स्टॉक विल क्लोज above this price which is around this level। 8 Jan 2020 को खरीदा, फिर मेरा स्टॉक ही चला गया, फिर खरीदा फिर चला गया, फिर खरीदा चला गया, बिकॉज नाउ इट इज बिलो 200 EMA। आई विल नॉट बाय दिस स्टॉक हेयर। ये यहाँ से पिक किया मैंने, इसको यहाँ खरीदा, फिर ये मेरा स्टॉक यहाँ बिका। जस्ट हैव सम पेशेंस। हाँ, अभी मैं बताता हूँ क्या होने वाला है इसके साथ। यू बॉट इट हेयर, आपने इसको यहाँ खरीदा 100 रुपए में, फिर खरीदा, यहाँ पे आपने बेचा, फिर यहाँ पे खरीदा, फिर यहाँ पे बेचा, नीचे आप बेचे। आपने जब इसको यहाँ खरीदा, यहाँ पे 178 रुपए में, यू आर होल्डिंग इट टिल 248 रुपीज। ओके, ये अगर आप 50 EMA के ऊपर खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। और मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ स्टार्ट के बिगनिंग में आता हूँ, कि मैं सिर्फ स्टॉक जब 200 EMA के ऊपर होगा तब तक होल्ड करूंगा। ओके, so this stock I bought here 22 rupees, it is not breaking 200 EMA till here, I sell at 40 rupees। Okay, so this stock at say 55 rupees I bought, around here I bought this stock 60 rupees, I sell it at 60 rupees। मैंने इसको यहाँ फिर खरीदा say 76 rupees में, I hold this stock till it is not closing below 200 EMA 88 rupees पे। सो ये बेसिक ट्रेंड आपको पता चल गया। तो इसमें बहुत पैसे नहीं बन रहे स्टॉक में आपके। आई शो यू वेयर विल यू मेक लार्ज मनी, बिकॉज सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आई विल डिसाइड व्हेन एंटरिंग इनटू अ स्टॉक एट व्हाट प्राइस आई विल एग्जिट। सो मेरा कोई प्राइस पॉइंट नहीं है कि किस पॉइंट पे मैं एग्जिट करना चाहता हूँ। मैं एक ट्रेंड 50 EMA के नीचे बेचना चाहता हूँ, या 200 EMA के नीचे बेचना चाहता हूँ। जो भी प्राइस मुझे मिलेगा मैं उस प्राइस पे बेचना चाहता हूँ। तो मैं 200 EMA फॉलो करता हूँ। I'll give you a live stocks which I am holding, how I selected those stocks which I am holding, or then we'll take Kotak Bank or whatever name you want to suggest, or whatever stock you are holding, we can discuss that. So you are able to see holdings. So I'm just showing in one of my accounts. So say I'll start with say Bank of India. Okay. So this stock actually I'm doing some experiment in this portfolio. So this Bank of India,
So this is the chart of Bank of India. So what I'm saying is when this stock will, इस स्टॉक का कुछ नहीं हो रहा है, ये है ना, इसकी देखो 50, ये इस पे ब्लू लाइन इस, देख लेते हैं कौन सा है इसमें हमने लिया है। तो सुपर ट्रेंड को एक बार हटा दें। सो दिस ब्लू लाइन इज 50 ईएमए, देयर मोर इंडिकेटर्स है, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये 50 ईएमए है और ब्लैक लाइन इज 200 ईएमए। तो जब तक स्टॉक 200 ईएमए के नीचे मैं किसी भी स्टॉक को छूता नहीं हूँ, इट इज लाइक इट्स ऑन द चाइना साइड, आई एम ऑन इंडिया एंड द चाइना। 200 के नीचे ईएमए माने स्टॉक बहुत वीक है, इसको नहीं खरीदना है। तो जब ये स्टॉक 200 के नीचे है तो मैं ट्रैक भी नहीं करता। जब ये 200 ईएमए के ऊपर गया, विच इज ब्लैक लाइन, आई स्टार्ट लुकिंग एट द स्टॉक, एंड व्हेन इट क्रॉसेस 50 ईएमए, बोथ 200 ईएमए, 50 ईएमए, आई बाय द स्टॉक। So the stock here crosses 200 EMA and previous high, all three, 200 EMA क्रॉस किया, 50 EMA क्रॉस किया, और ये अपने प्रीवियस हाई के ऊपर है। तो आई बाय दिस स्टॉक, आई विल स्टार्ट ट्रैकिंग दिस स्टॉक। बट स्टॉक को जब तक इसने प्रीवियस हाई को नहीं क्लोज किया ना अपने, तो यहाँ पे इसका प्रीवियस हाई है जो नियर टर्म हाई है, इसके नीचे मैं नहीं खरीदूंगा, बिकॉज इट कैन गो डाउन अगेन। तो अराउंड 66 रुपीज द स्टॉक इज क्लोजिंग above previous high, so I bought this stock from here। तो ये स्टॉक प्रॉफिट में है, तो 66 रुपीज में खरीदा, यह स्टॉक अभी प्रॉफिट में है। तो व्हेन विल आई सेल स्टॉक, एनीबॉडी वांट्स टू शेयर कि ये स्टॉक बिकना कब चाहिए, मुझे कब बेचना चाहिए स्टॉक? Maybe when it goes below 50 EMA. हाँ, तो दिस स्टॉक इज नॉट गोइंग बिलो 50 EMA, अभी 50 EMA से बहुत दूर है। अभी 66 Yeah. रुपीज है इसका 50 EMA। बट ये अगर नीचे आने लगेगा, इसने रेड कैंडल दिया है, नीचे आने लगेगा, तो ये आई वेट फॉर इट टू कम टू 50 EMA। अभी उस 50 EMA में आने में मुझे लॉस हो जाए कोई बात नहीं, but I'll continue to hold this stock. Why should I continue to hold this stock? I'll give you another. What is the possibility in a stock, and we don't know what stock will go where. So if I show you Bajaj Finance Limited stock, so if say if you have bought this stock here, नीचे में अगर आपने खरीदा होता है ये स्टॉक को, जस्ट थियोरेटिकली हम मान लेते हैं, और आपने 200 ईएमए को फॉलो किया होता, से आपने स्टॉक को यहाँ खरीद लिया, 200 ईएमए को फॉलो किया होता से 200 रुपए में, तो ये स्टॉक आपका जाके बिकता 850 रुपए में, 800 रुपए में जाके बिकता। और फिर अगर आप 200 ऊपर खरीद लेते इसके ऊपर, या आप खरीद लेते 1200 रुपए में, यह स्टॉक आपका जाके बिकता यहाँ पे 2200 रुपए में। एंड देन यू इफ यू हैड बॉट दिस स्टॉक एट से 3000 रुपीज, यहाँ पे आपका स्टॉक निकल गया, ये आपका मई में 2020 में निकल गया, अपने स्टॉक को यहाँ खरीदते आप 5000 रुपए में, तो आपका स्टॉक सबसे पहले जाके बिकता 6500 रुपए में बिकता। सो what happens when you are following the, if you are able to get some stocks in the trend, there is no limit on the upside where a stock can take you. What is the downside? When I will exit a stock? I'll show you some when to which are not doing well for me. Say, so this stock is in 10% loss right now on my purchase price. ठीक है ना? So I bought this stock, जब इसने इसको ऊपर क्रॉस किया, मैंने इसको यहाँ खरीद लिया ऊपर में। अभी स्टॉक नीचे आ रहा है, अभी 50 ईएमए के आसपास है स्टॉक। तो मैं अपने स्टॉक में 200 ईएमए को ट्रैक करता हूँ, 50 पे नहीं एग्जिट करता, 200 पे एग्जिट करता हूँ, ताकि उस समय वो बिल्कुल डिसाइसिवली इट हैज ब्रोकन आउट एवरीथिंग। So what will happen? Maximum 20 to 25% loss, I will exit the stock. But profit कितना आएगा? 80%, 100%, 150% तक प्रॉफिट आ सकता है सिंगल स्टॉक शेयर में। What happens? You cap your loss at small amount, your gain is unlimited, potentially unlimited. Okay? So I'll just say here, so I'm just doing some experiment in some portfolio. So I'll just, there are many ways to pick up a stock. I'll just show what is happening। एक महीने में मैंने ये experiment किए हैं। So this is a portfolio which I created from 4th of November. So you see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10 stocks are in positive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 stocks are in negative. Net profit of 46,000 on investment of 6,36,000. 7% का 4th नवंबर से बना है पोर्टफोलियो. रिटर्न इन अबाउट 35 डेज 7% का रिटर्न. अब इसमें से आप देखो कि मेरी सॉर्टिंग हमेशा कैसे होती है, लॉस से प्रॉफिट होती है. मेरा साइकोलॉजी ये है कि मैं प्रॉफिट से लॉस सॉर्ट आउट करूं, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ, आई इफ देयर इज एक्शन देयर विल बी एक्शन इन द स्टॉक. तो 15-20% के लॉस पे ये स्टॉक हो सकता है निकल जाए और हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए. तो लाइक से दिस स्टॉक पीएसबी आप देखोगे ना, तो इसको मैंने सिर्फ 3 दिन पहले ही खरीदा. इट हैज मूव्ड, और कब खरीदा मैं आपको बताता हूँ. पीएसबी मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ. तो दिस पीएसबी यू सी सच अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट इसने दिया. इस कैंडल पे खरीदा मैंने. जिस दिन ये स्टॉक कितना बड़ा है, 25 रुपए से ये अपर सर्किट दिया था स्टॉक ने इस दिन. और व्हाट स्टॉक व्हेन इट वाज गिविंग अपर सर्किट, टिपिकली क्या होता है कि जब हम स्टॉक बेच देते हैं, जब स्टॉक अपर सर्किट पे है, हमको तो सोचते हैं कब निकले हम. टिपिकल हमारी टेंडेंसी होती है कि हम स्टॉक से निकले कब. तो आइडिया ऑफ जस्ट डूइंग दिस कि आपके जो प्रॉफिट के स्टॉक है ना, तो मैक्सिमम एक स्टॉक में आप लॉस देखो मेरा 10% है. मैक्सिमम एक स्टॉक में प्रॉफिट 35% है. दिस 35% कैन बिकम 100%, 150%. This 10% will maximum become 20% or 25%. And I like that. So I'll keep on weeding out stocks which are not doing well for me, and I'll continue with stocks which are doing well for me. Okay. So say, so I don't know any question on this. I hope I'm clear. I'm not clear. Rajesh, one general question, not on the strategy of, I mean, not on the momentum trading strategy, but more on filtering those stock. So what हाँ. would be the source of that information? Because this will require a lot of number crunching. While we can pick up one stock and see that, but I mean, their universe has much largest number of stock. So from where to get that kind of data to do that number crunching? Yes, yes, yes. And I was looking for this question. Otherwise, I would have answered of my own. I was picking up this topic next. Anything else? इस पे आऊंगा ऐसे. Just next topic is this. Because ये तो आसान है कि ये मैंने बैंक ऑफ इंडिया दिखा दिया कि ऊपर जा रहा है. पर 5,000 स्टॉक है. 5,000 स्टॉक में व्हाट टू बाय बैंक ऑफ इंडिया, व्हाई टू बाय पीएसबी, व्हाट टू बाय से आदित्य बिरला, एंड व्हाई आई बॉट अ स्टॉक व्हिच इज गिविंग मी लॉस आल्सो. है ना? Anything else anyone wants to address or wants to share? Okay, so I'll take this. So I'm a paid member of a club called Stockage Club. उनका ना फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर है, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ. It is not a recommendation. There are many other ways to get the stocks filtered. तो यहाँ पे ना मैंने कुछ स्कैन्स बनाए हुए अपने लिए. तो ये क्या करता है कि आप अगर फिल्टर डाल दोगे ना, तो स्टॉक आपको सेलेक्ट करके दे देगा. तो मैंने एक स्कैन बनाया हुआ है. मल्टीपल स्कैन है मेरे पास. सुपर 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 स्ट्रॉन्ग स्टॉक, किस स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल स्टॉक खरीद रहे हैं. बहुत सुपर वीक स्टॉक क्या है, बिकॉज सुपर वीक स्टॉक में भी पैसे बन सकते हैं अगर ऑप्शन में है तो. सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक, स्ट्रॉन्ग स्टॉक विच आर स्ट्रॉन्ग एंड 52 वीक हाई वैल्यू बाइस के भी स्कैन कुछ बनाया है मैंने. तो ये फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट का एक स्कैन बनाया है. ये क्या करता है, ये पूरे लिस्टेड यूनिवर्स से स्टॉक पिक करता है जो अपने 52 वीक हाई के आसपास है, बिकॉज आई विल बाय ओनली व्हेन इट इज क्लोज टू इज प्रीवियस हाई. द स्टॉक इज outperforming benchmark index in both 1 week and 3 months. It means if it's a bank stock, it is. ये मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है, विवेक बजाज की वेबसाइट है, तो मैंने उसकी स्ट्रेटेजी कॉपी की है. दिस वेबसाइट इज ओन्ड बाय विवेक बजाज. कलकत्ता के का स्टॉक ब्रोकर है. काफी अच्छा इसके ऐलान मैंने पहले शेयर भी किया हुआ है. तो आई कॉपीड दिस हिज स्ट्रेटेजी. इट इज नॉट माय स्ट्रेटेजी. स्टॉक आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स, बैंक का स्टॉक है तो 1 वीक में और 3 वीक में आउट परफॉर्म कर रहा है. तो ऐसा नहीं है सिर्फ टेक्निकल पे स्टॉक. अब पेटीएम विल शो स्ट्रॉन्ग टेक्निकल, आई विल नॉट बाय पेटीएम. It doesn't matter how strong the technical. First, the stock should meet the fundamental criteria. स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हुआ है, इंपॉर्टेंट. रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड इंप्रूव हुआ है. क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर. क्वार्टरली एबिटा में ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर. क्वार्टरली सेल्स भी इंप्रूव हुई है. तो पहले ये 5 फिल्टर इंपॉर्टेंट है.
आपकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एबिटा बढ़ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आरओसी बढ़ रहा है, आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर आरओई बढ़ रहा है। अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आते, यू कैन फिल्टर और वी कैन डिस्कस सम टाइम लेटर। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस भी बढ़ रहा है, कंपनी का फंडामेंटल इंप्रूव हो रहा है, स्टॉक प्राइस भी बढ़ रहा है। तो ये लिस्टेड यूनिवर्स में कितने स्टॉक्स हैं ऐसे, तो स्टॉक आपको फिल्टर करके दे देता है। मैं सिर्फ मेजर स्टॉक्स ट्रैक करता हूँ, यू कैन ट्रैक ऑल एनएससी स्टॉक्स, ऑल बीएससी स्टॉक, but because I don't have bandwidth to track so many stocks. So these stocks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 stocks are meeting all this criteria, perfectly meeting this criteria. कि इसके प्रॉफिट ऑफिट्स भी ग्रो हो रहे हैं, इनके स्टॉक प्राइस भी बढ़ रहा है। Then he's saying some of the stocks are almost there, are meeting and not meeting. So this is one filter I use to select stock. तो मैं हर सैटरडे या संडे को एक दिन बैठ के ये सारे स्टॉक मोटा मोटी क्या होता है, हर वीक में एक या दो स्टॉक ही ऐड होते हैं। वंस यू हैव फिल्टर्ड द लिस्ट, one or two stock will get added to the list, so I add those stocks. But right now, say I'm tracking, if you see my tracking list, so this has about 47 stock, 42 stock, because 50 से ज्यादा ही वीक में ला नहीं सकते आप। 40 stock and 33 stocks, 24 stocks, so roughly 250 stocks I'm tracking on daily basis. So every week 5-6 stocks get added and 5-6 stocks get deleted. उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। Some stock I track on, say I'll just share, so I have more parameters. And you can have your own parameters. आपके जो भी आपको satisfy करते हैं ना, so you can put that parameter and your stock will get filtered. So institutions वगैरह सब यही यूज करते हैं। So जिसमें institutions are buying their stocks. Say mutual fund is increasing their stock. इसमें भी सिर्फ ये नहीं कि mutual fund ने अपना stock खरीदा तो मैं खरीदूंगा। Criteria क्या है? Stock again. Stock has to price has to be strong. Is beating the benchmark 1 week 3 week. आरओई ज्यादा होना चाहिए, आरओसी अच्छा होना चाहिए, कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, एंड इंस्टीट्यूशन इज इंक्रीजिंग स्टेक। तो इस फिल्टर में अब जब आप जाएंगे ना, तो पेटीएम, नाइका और सारे सारे आउट हो जाएंगे। जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं अच्छा है, लॉस मेकिंग कंपनी वगैरह सब आउट हो जाएंगे। ऑल कंपनीज विल ड्रॉप। तो सिमिलरली आई हैव स्कैन फॉर कंपनीज, डेट फ्री कंपनीज, सेम क्राइटेरिया, जिसकी आरओई बढ़ रही है, आरओसी बढ़ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ रही है, डेट फ्री है, और से गिविंग अ डिविडेंड यील्ड ऑफ से मोर देन 5% and meeting the criteria of ROC, ROE, आपका, then only I'll buy the stock. But you can have your own criteria. I'll show you some why I love the stock like TCS and all, and of course वो अभी momentum में नहीं है। मैं TCS का आपका value investing and इसका दोनों का आपको दिखाता हूँ। Just thought came to my mind. So say this is TCS, है ना? TCS का फंडामेंटल आप देखेंगे, रेशियोज देखेंगे, माइंड ब्लोइंग। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 44%। And 60%, and those who are into finance industries and those who track companies, जैसे Kamal would have seen at least 3-4 thousand companies of his own, maybe more. I would have seen similar number of companies. आपको दुनिया में ये बिजनेस कहाँ मिलेगा जो 44% आपको आरओई देता है? 44% आरओई माने आपकी कैपिटल 2.5 साल में डबल हो जाती है। एवरी 2.5 years दिस बिजनेस डबल्स इज कैपिटल, विच इज माइंड ब्लोइंग। एंड दिस कंपनी, if you see its ratio on the say growth ratios, if you see this company is growing itself, it has increased its sales by 16%. In last 5 years, if you see 10 years, there have been no year in which this company has uh, sale has declined in this company. Only in one quarter, the PBIDT EBITDA growth marginally declined रेड में। एक क्वार्टर में, एक साल में हल्का सा इसका नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ था। Otherwise, this company consistently growing at कैपिटल ऑफ 44% कैपिटल पे रिटर्न दे रहा है, जो 2.5 से 3 साल में आपके पैसे को डबल कर रहा है। तो फंडामेंटली दिस कंपनी इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई हैव डिसेंट क्वांटिटी ऑफ टीसीएस एंड डेट। बट इसका स्टॉक प्राइस अभी अच्छा नहीं करना है, कर रहा है। तो वेदर यू विल बाय इट और नॉट बाय इट, इट डिपेंड्स।
whether you are buying it from value, तो TCS को मैं किसी टेक्निकल पैरामीटर पे नहीं बेचूंगा. When I will sell TCS, when it will stop generating say even 30-35% on ROE, इसकी सेल्स ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगी, तब मैं टीसीएस को बेचूंगा. और टीसीएस में मैं हमेशा पैसे बनाता हूँ. आई विल शो यू द टीसीएस चार्ट. तो अगर आप जाएंगे इसमें से टीसीएस हम सर्च करते हैं. टीसीएस में डिस्क्लेमर ये है कि आई एम इन्वेस्टेड सो आई माइट बी बायस टीसीएस. तो आप ये टीसीएस का स्टॉक देखेंगे ना, सी दिस ब्यूटी ऑफ चार्ट, है ना. दिस स्टॉक, इस स्टॉक में अगर आप 200 ईएमए है स्टॉक का, आपने अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग अगर आप करते हो, तो लास्ट इसका हाई है दिस प्राइस. दिस प्राइस आई बॉट से अराउंड 2200 में टीसीएस बेचा मैंने 200 ईएमए के ऊपर. व्हेन विल आई सेल टीसीएस? आई सेल टीसीएस यहाँ पे, रफली यहाँ पे, विच इज अ प्राइस ऑफ से 3500 में बेचूंगा. 2200 में अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हो, 2200 में खरीद के मैं 3500 में बेचूंगा. पर टीसीएस में किसी प्राइस में सेलर नहीं हूँ till the basic fundamental changes. So TCS is part of my portfolio. But आपने अगर मोमेंटम में इसको लिया 2200 में खरीद के 3500 में निकल जाओ. See this stock. The stock is 2900 has almost bottom out. So anytime you get the stock around 3000 rupees, if you are and you are looking for a value buy, you buy this stock. One can buy this stock. And again, it's not a recommendation. TCS के कुछ मैं इंटरेस्टिंग पैरामीटर आपको दिखाता हूँ. आप इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करोगे ना, तो टीसीएस में 1.5% का 1.25% का डिविडेंड डील है, 1.3% का. दिस इज एक्सक्लूडिंग बायबैक. तो टीसीएस डज बायबैक एवरी ईयर. एंड इफ यू टेक द रिटर्न विल बी, सो इफ यू सी अनदर स्टॉक से एचसीएल टेक, जो कल गिरा है 6-7%, 7% गिरा है ना. इसका फंडामेंटल देखोगे एचसीएल टेक का, डिविडेंड डील इज 3.82% इज डिविडेंड डील. 4% आपको ये बिजनेस डिविडेंड डील देता है. इसके मैं आपको फंडामेंटल दिखाता हूँ. एचसीएल टेक, अच्छा फंडामेंटल देखिए 22% का आरओई है इसका. मैंने आपके पैसे 3 से 3.5 साल में डबल होते हैं. कैपिटल 3 से 3.5 साल में डबल होती है. सो these stock I don't buy under momentum. These are my core portfolio and I embed options on this. तो इसमें मैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों राइट करता हूँ. तो से 4% का डिविडेंड आया. और टीसीएस में भी सेम है. अगर आप टीसीएस के बाईबैक के यील्ड को इंक्लूड कर दोगे, 3.5-4% का आपको डिविडेंड यील्ड है. प्लस आपको 10 से 12% ऑप्शंस के पैसे मिलते हैं. एंड एनी अपसाइड इन द स्टॉक इज योर्स. एनी अपसाइड इन द स्टॉक प्राइस इज योर्स, है ना. तो बट अगर आपके पास मैक्रो समझने का, मैं ऐसी एनालिसिस कितने स्टॉक पे कर सकता हूँ? 10 पे कर सकता हूँ, 20 पे कर सकता हूँ, 250 पे तो नहीं कर सकता. एटलीस्ट मैं नहीं कर सकता. तो हाउ टू बाय दिस स्टॉक मैकेनिकली यूजिंग मोमेंटम. तो टीसीएस, assuming that I don't understand the underlying the business model of TCS, मेरे को सिस्टम ने थ्रो किया हाई आरओई, हाई आरओसी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ. तो TCS I bought at 2200, exited at 3500, 1.5 साल में. सिंपल. So, so this is easy. And roughly momentum, if you invest and the market is not even going up, market is stable, 35 से 40% का क्या अगर बनता है, 35-40% का आरओई आपका, आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आती है. पर अगर हम 18 से 20% का टारगेट लेते हैं, तो इट्स केक वॉक. फ्यू स्टॉक्स विल गिव लॉटरी इन मोमेंटम इन्वेस्टिंग. So, any this is all from me. Any question I can take. If you want to discuss any stock, we can discuss. Rajesh ji, can we Yeah, discuss on Kelton Tech and Maharashtra Seamless? yeah, we can. Just give me a moment. So we'll discuss from momentum perspective. So momentum में Kelton, how to spell? KELLTON. K. It starts with K. Kelton Tech Solution, right? हाँ,
Yeah. It's a recently listed stock, it seems. No, it's old Yes. stock. Yeah. So this stock, if I see it from this stock is below 200 EMA and 50 EMA, I'll sell this stock. Okay. At what price you have bought this stock? I entered somewhere around 20 rupees. 20 rupees. So when you buy it, bought long back, right? Yeah, actually, so like my average has like come down, and I got some split and other things as well because of some bonus and all. So I I'll exit entered this stock. somewhere around. Yeah, sure. So one should exit. See, few things I want to share. So never average a stock when it is falling down. Mm-hmm. Exit the stock. You can top up the stock if it is going up. Mm-hmm. So increase your bet on winners, reduce your bet on losers. ये Got it. बहुत Got it. basic fundamental shift we all should do. We should move out of the losers, increase your bet on the winner. And Mm-hmm. everything in life, not only stocks, if you keep on increasing our bet on winners, so assume कि say we are part of a 1 lakh employee company and our company is not going to hire CEO from outside. CEO is going to be from inside the company. Mm-hmm. So who can become the CEO? Anyone in 1 lakh can become the CEO. Mm-hmm. So if I have to take a bet who will become CEO in next 15 years, 20 years, whatever the time my management trainee takes, what are the parameters I can track? I can see who is getting every year frequent promotions and salary hikes, Mm-hmm. who is getting job rotation across geography. So first year, out of 1 lakh, 3-4 thousand will get filtered. तो Right. मैं बाकी 97,000 को छोड़ दूंगा. Next year, out of Mm-hmm. 3,000, say 1,000 gets filtered. I stay with those 1,000. Mm-hmm. I leave those 2,000. Out of those Mm-hmm. 1,000, 500 gets filtered, 10 gets filtered, 1 gets filtered. So every time I increase my bet on the winners. Mm-hmm. So I make anywhere in life, if we bet on the winners, we make more money than we bet on the losers. अभी हम देखते हैं आपने दूसरा बताया महाराष्ट्र का इंडेक्स ना. Yeah. People have made a lot of money in this stock. I don't hold. So this stock is, see this beauty, is above 50 EMA, above 200 EMA. And ये स्टॉक ने 200 EMA लास्ट तोड़ा है अप्रैल 2022. Second 22nd April 2021. For more Mm-hmm. than 1.5 years, this stock is above 200 EMA. एंड जब ये स्टॉक अगर आपने यहाँ खरीदा इस प्राइस पे जब ये भाग रहा था, अभी देखिए स्टॉक जी. को, अभी देखिए स्टॉक ने यहाँ से 180 से 275 वो कितने दिनों में, माय गॉड, 6 अक्टूबर 2021 से 22 अक्टूबर, 15 दिन में स्टॉक 190 से 280 275 हो गया. तो दिस इज सुपर बुल ट्रेंड. अभी इसका इसका कैंडल, लास्ट कैंडल इसका रेड आया है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है. So just wait Mm-hmm. for it to close below 200 EMA. If it is not closing below 200 EMA, keep riding. जी. And जी. if somebody has bought around 180, it is at say 383. In about 1.5 years, your money has become 3 times. जी. So जी. this is जी. the power of momentum. If you follow the momentum, this is the power. Of course, we have done through value investing, but अगर आपको इसको exit कब करना है, तो इसको just ride करना है. मैंने रादर मैं तो ये बोलूंगा कि आपका जो पुराना वाला जो पहले वाला स्टॉक है उसको बेच के जब ये 50 EMA के ऊपर क्लोज हो, यू कैन बाय इट अगेन. मैंने जब ये 450 के ऊपर क्लोज देता है तो यू बाय इट अगेन, सेल दैट स्टॉक एंड बाय दिस स्टॉक अगेन. दिस इज व्हाट आई डू. जी. जी. Understood. Thanks, Rajesh. एनीथिंग है इसमें, जैसे आपका पहले वाली कंपनी का, उसका एक बार फंडामेंटल भी देख लेते हैं. आप बताएं तो उस कंपनी का नाम फिर से बताएं. Kelton Tech. KE डबल एल L TOM. केल्टन टैक. Yeah, Kelton हाँ, Tech. केल्टन टैक का फंडामेंटल देखेंगे ना, इसके रेशियो
इस ROE 15% 17% डिसेंट है इसका, बहुत खराब भी नहीं बहुत अच्छा भी नहीं है. And sales sales is growing 15-17%. So it's not a great stock. It's okay stock because tech companies are doing far better. Then one thing is that you can check how much promoters are holding. Promoters are holding 52%. No big shareholder is holding any stake in this company. No big bull is holding. So mutual funds are also not holding this stock. Please exit this stock. Neither mutual fund nor any big bull is holding. The stock might go up, but long term you can't create wealth out of this stock. Very difficult. I'll just maybe I'll just share the reason why I entered in the stock. The reason was I entered around 40, 45, 50 like that. Okay, and it touched almost 135. Okay, within span of 6 months. So that was the some sort of understanding I had. Probably it might shoot up. Okay, and it just so happened that I thought that it will take a dip and then again it will go up because there was some reason that are happening at the company level and I was aware of that internal things. But after that, whatever happens, like it's a small stock, like a lot of operators kind of entered in it and they started manipulating it. That's my understanding. I don't know how true it is or not. I'm just sharing the thought which I had, so that if I or anyone else goes through the same thought process, they can correct it with your overall understanding of the market. So at that time, I kept on holding it and I just averaged it one time. Still, I'm in profit in this stock because my entry price is around 45 as a whole. So now the only thing is because I had this understanding that it will again be taken forward because a lot of operators have entered around 60s plus minus price. So I'm expecting it to again start climbing to 100 and plus, maybe another 6 months to 1 year. That was my understanding. But I do understand these are all hypothetical scenarios and it's always good to go with the fundamentals as you suggested. So as you suggested, I'll slowly I'll try to move out of this stock and enter into Maharashtra Seamless or any such stock like TCS or something. Yes, sorry, ma'am. I'm not suggesting that you buy or sell, but yeah, if we have to follow momentum in investing indicators, it is both below 50 EMA and 200 EMA. And if I hold this stock, I'll sell the stock. So this is what I suggested. And also fundamentally, also there is no investor into this stock, no mutual fund, no big investor. So and the company Right. technically, in terms of performance, also doing average. So you can. Right. Yeah, actually, this is into GIS technology. So since I'm from the technical sector, so I was following it up. I was aware what are their order sheets and all. So that's why I entered in this stock. And the GIS market from last 1.5 years, because of COVID, it has went down. But because of new things coming up in India and Asia, because of arms race, we are expecting it to move suddenly forward. So there are a couple of big orders that are in pipeline. So we have an eye on it. So that's the reason actually. Yeah, one thing is that once we have bought a stock, we should not change our view कि हमने तो इसको fundamental से खरीदा, इसको hold करेंगे, whereas we bought under momentum. So if you're buying under momentum, hold under momentum. If you bought as a value investor, hold as a value investor till the parameters change. For TCS, if the stock has fallen, it has broken the momentum indicators, I'm not selling because I am clear that why I bought this stock. You know. So this is anything else from anyone else? One thing we can change is that we should move out of losing stocks. ये बहुत important है. This will significantly, and there should be some non-emotional parameters to decide when to sell a stock, especially losing stock. Anything else? थोड़ा सेशन technical था. I'm not sure first. And there Just may, Rajesh, sorry if I may, just wanted to touch upon things like you happened to mention about scanners and as you also said there are a couple of other websites which kind of help to create scanners. The only thing is basically since my thought is since we are investing our time, so I was looking forward more into momentum buying. And just want to understand basically what would be the right parameters to evaluate or create the right scanner which will capture the momentum. And I wanted to understand how we can utilize the MTF part in it, because momentum, if I get 2 or 3% of thing, but I'm holding large quantity in swing trading kind of scenarios,
and I can Mhm. make some amount of money on it rather than holding it for like riding the curve and dividing the capital. So I have so far adopted this style wherein like I would bet on like 1, 2, 3 stocks who would be like have some sort of 2 to 10% kind of momentum in like say 1 month or so, and just try to identify those stocks. But so far my hit ratio is around like 50% only. So I understand like a lot of parameters needs to be checked, but I just wanted to understand like your take on it. Yeah. First, I'm not a very fan. Not a fan of picking individual stock. So my 80% portfolio is in Nifty and USD INR. Between Mm-hmm. Nifty and currency, 80% of my portfolio is there. 20% portfolio is some small part is momentum, and here and there is more as a part of my R&D. Mm-hmm. Mm-hmm. So R&D in the sense that what is happening in the market, what others are doing. Because type of return I generate from Nifty and currency, I am very happy with that. I generate about 25-30% annualized and very, very Mm-hmm. happy with those returns, plus the underlying return. So for me, 80% is Nifty and USD and 20% is stock. But stock, how to predict? Say, if I have bought a stock, how to say that the stock will go by 2% to 10% this year? At least I don't know. Mm-hmm. I just follow the market. Market में बढ़ गया तो अच्छा है, नहीं बढ़ा तो अच्छा है. Okay. So very difficult to predict which stock will go up. And मैं बताऊं अगर आपने 10 स्टॉक पिकअप किया, 8 स्टॉक बढ़ गए, डिजास्टर आपके लिए. Mm-hmm. मैंने मार्केट में देखा है, if you win in the market initially, you lose large capital because I'll start feeling that I am doing things right and Mm-hmm. I will be right in future also. So if I'm right Mm-hmm. today, tomorrow I'll be right. There is no guarantee in the market. I'm right today, tomorrow I can be wrong. But if we follow mathematical approach to what we Mm-hmm. buy and what we sell, it does not matter which country you're trading and which underlying you're trading, you will make money. Got it. So I have taken out this process of selecting stock from my इन्वेस्टिंग स्टाइल. मैं निफ्टी में इन्वेस्ट करता हूँ. आई पिक्ड अप वन अंडरलाइन कि मैं निफ्टी में खुश हूँ. बट स्टॉक भी सिलेक्ट करना है तो मोमेंटम में आने के पहले भी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए. सी, Mm-hmm. यू हैव गॉन टू अ पार्टी वेयर देयर आर 300 डिशेस टू ईट. कैन यू ईट ऑल ऑफ देम? नो, राइट? जी. You can eat up to the appetite of your stomach and maybe little more than your stomach appetite. तो 20, 30, 40, 50 आप खा पाएंगे. So we are in a party where 1,000 dishes are served. So we don't have to eat all 1,000. We have to pick up as per our liking 10, 15, 20 dishes, which will take care of will keep our stomach full and our taste bud happy. तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई बाजार में कोई स्टॉक 5 गुना हो गया, मुझे क्या मतलब? As long as my Mm-hmm. stock is giving me 25-30% return, which is phenomenal return to have. Anything above 15% is phenomenal return to have. I am happy. आप देखेंगे जी. no two large investors in India have made money from the same stock. They hold different stock and still they have made money. तो अपना एक अगर कर लेना. और ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है प्रिडिक्शन में नहीं जाना चाहिए मार्केट में. इट गेट्स स्ट्रेस. जी. मार्केट जैसा मर्जी जाए. आई एम फॉलोइंग अ मेथड. लेट द मेथड गिव्स रिजल्ट, अदरवाइज आई चेंज माय मेथड. दिस इज व्हाट आई फील. Yeah, understood. Understood. Absolutely. See, these are the pearls of wisdom. Like people like me, kind of try to gather. The reason is like we start following with following different sources of understanding. They have different motives. They have different thought processes. And whenever we try to combine everything, it becomes like a hodgepodge khichdi kind of stuff. And at times it can give some result, but it's not like consistent. So I mean, I understand like that's the reason I want to understand basically how to achieve that consistency, and what methodology to adopt, and like what is like the psych which needs to adopt it. So like I mean, I understand like basically what you are trying to say and portray. I would definitely try to understand and like follow that, sir. My sense is that you take about 7-8 years at least Mm-hmm. to come to a conclusion that what will work best for you. Mm-hmm. So today, say momentum is giving me 30%, 35% return, but I feel I cannot deploy 3-4 crore in momentum. And say Mm-hmm. Nifty is giving me say 20-22% return,
but I am confident that I can deploy large capital. ना? But tomorrow if my view changes on momentum, I shift my 80% capital to momentum. मुझे थोड़ी प्यार है मुझे निफ्टी स्ट्रेटेजी से प्यार है ना, मुझे momentum से प्यार है. मुझे तो जहाँ